Hi everybody. My apologies. I believe I was supposed to share this PPT, so I have goofed up and not downloaded it. So please excuse me on this and give me 2 minutes. I'm going to get this started for you right away. So just to kind of introduce the whole idea. We are going to be talking to you about a lot of things today. And before we even do anything, the first focus is that we would like to introduce Dr. Vani Suman Hospitals, and that is what the idea is at the moment. Was established in 1995 as per a dream held by Dr. Suman Sarda and Dr. Vineet M. Sarda. The mission of our hospital is to create a safe, trustworthy environment for patients through well-trained, committed professionals who believe in combining high-tech with high-touch. Vision of our hospital is to provide safe, reliable, high-quality care for every patient every day. The consultants of our hospital: Dr. Suman Sarda, Dr. Vani Thapar, Dr. Vidhu Maudgil, Dr. Zini Sarda Gill, Dr. Neeraj Thapar and Dr. Amit Maudgil. Physiotherapist, Dr. Manmeet Kaur, dietitian and nutritionist, dietitian Shelly Khurana. Facilities we provide in our hospital are antenatal care with exercise during pregnancy, high-risk pregnancy care, normal delivery and cesarean section. In gynae, we deal with laparoscopic and open surgeries for fibroids, ovarian cysts, hysterectomy, hysteroscopic surgeries. In vaginal hysterectomy, DNC, colposcopy and cervical biopsy. Urogynecology, we deal with stress or urinary incontinence, cystocele and pelvic floor repair, abdominal and vaginal operations for wall prolapse. In infertility, we deal with female infertility problems like PCOD, tubal block, ovarian cyst fibroids, TB. In male infertility problems, we deal with oligospermia, azoospermia. Procedures are IVF, ICSI, PESA, TESA, IMSI, IUI, egg donation, sperm donation, and surrogation. In pediatrics, we deal with vaccination, newborn baby care, well baby clinic, pediatric surgeries, guide counselings. In medicine, we provide treatment for diabetes, high BP, thyroid disorders, heart diseases, liver diseases, and all type of fever and chest diseases. In surgery, we deal with appendix surgery, hernia repair, gallstone surgeries, breast, lump, abscess, etc. In physiotherapy, we deal with treatment related to knee pain, back pain, neck pain, shoulder pain, neurological conditions like cerebral palsy, prenatal and postnatal exercises, and injuries regarding sports. We also provide diet charts and diet plans under our dietitian. Thank you. Am I audible, Sonali? Yes, Dr. Vani, I can hear you very clearly. Ashutosh's voice is totally off. No worries. So let me welcome all the participants for today. And I'm Vani. I'm Dr. Vani Thapar, working in Suman Hospital as a consultant and infertility specialist. And a lot of the ladies here would be, of course, knowing me already. And I just want to welcome you today on this Sunday morning and share with you that, becoming a mother is a privilege. And that is what gives us an edge over the men. Okay? We are the creators. We are the nurturers. We are the ones who actually take things forward. So how strong we need to be? हमें कितना उसके लिए strong होना चाहिए? ये हमेशा हमें अपने आप से पूछना चाहिए. Because अगर ये right मिला है हमें to be the creator, उसके साथ एक responsibility भी मिली है. To rise up to that role of being the creator and the nurturer. है ना? तो ये रोल इतना खूबसूरत है कि इट शुड बी एक्चुअली गवर्न्ड विद प्राइड, नॉट फियर. यंग गर्ल्स हमारे कंट्री में बहुत कम एज पे लड़कियों की शादी हो जाती है एंड लॉट ऑफ देम आर स्टिल नॉट रेडी टू टेक अप द रोल ऑफ अ मॉम एंड समटाइम्स थिंग्स आर नॉट स्पोकन अबाउट. बहुत सारे मिथ्स रिलेटेड हैं टू प्रेगनेंसी, टू चाइल्ड बर्थ. तो वो चीजें कई बारी हमारे दिमाग में फियर पैदा कर देती हैं.
और लेबर एक ऐसा इशू है जिसको लेके हर न्यू मॉम थोड़ी सी डरी हुई होती है. जो नानी दादी और फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस होता है, दैट इज व्हाट एक्चुअली गाइड्स आवर थॉट प्रोसेस. लेकिन ये वेबिनार का एक मकसद है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है दैट शुड बी गाइडेड बाय इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन गिव्स यू स्ट्रेंथ. इंफॉर्मेशन मेक्स यू एक्चुअली वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, है ना. तो अगर आप उस माइंडसेट के साथ अप्रोच करेंगे अपने प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को, द होल स्टोरी कैन चेंज. So today I really take a proud privilege to present this webinar to you, which is dedicated to how to, work for pain relief during labor, ताकि आसान हो जाए. You should look forward to that beautiful event of your life, which is called labor, which results in another beautiful thing, which is called a baby. And I'm so happy कि एक इंसान है, एक लेडी है जो बहुत साल पहले सुमन हॉस्पिटल में आई थी. पर्सनली उनका इंट्रोडक्शन अभी मिलेगा आपको. उनका नाम है सोनाली. जितनी खूबसूरत वो देखने में है उतनी खूबसूरत वो इंसान भी है. एंड द कंटेंट शी शेयर्स इज प्योरली हेवनली एंड ग्रेट, एंड इट कैन हेल्प यू ऑल in a very big way to become confident when you are going to have your baby. So over to you. Thank you, Dr. Vani. That was a glowing reference, and it has indeed been a privilege because ये कुछ साल पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी. मैं 2-3 बार लुधियाना आई हूँ एंड आपके हॉस्पिटल में मुझे बोलने का मौका मिला था. आई स्टिल रिमेम्बर दैट, and I also remember that warmth that she has always greeted me with. Having that cup of tea after the webinar together has always been part of my memories. So thank you so much, and I'm really privileged to be back here again, and hopefully whatever changes have happened in the world thanks to this COVID situation, maybe we will get to work like this more often together because we don't have geographical boundaries anymore, right? So I'm going to give my own introduction. Our organizer, the person who has been doing introductions, he seems to be having some technical issues. So anyways, I love talking, so I'll do my own introduction. My name is Sonali Shiblani, and I'm from Mumbai. Personally, let me start with my personal introduction. I am a mother. I have 2 children. Of course, my children are much older. My son is going to turn 20 this year, and my daughter is going to turn 18. And at one point, I was also like you guys, a first-time expecting mother, with a lot of fears, with a lot of apprehensions. When I first saw my pregnancy test, I can seriously resonate with what Dr. Vani said. जब मैंने पहली बार वो pregnancy test देखा, तो मेरे मन में खुशी तो थी, but उसके साथ में एक और ख्याल आया कि I hope मुझे twins हो जाएं. And पता है ये क्यों ख्याल आया? क्योंकि मुझे हमेशा 2 बच्चे चाहिए थे, because that was my life plan. इसको हम life plan बोलते हैं. मुझे हमेशा 2 बच्चे चाहिए थे. I wanted that for myself and my family, but I did not want 2 labors. डर लेबर का था, बच्चे संभालने का नहीं था. तो उस हिसाब से my whole focus was कि twins हो जाए, but लेकिन twins नहीं हुए. My पहली जो डिलीवरी हुई वो इतनी आसानी से हो गई, इतनी स्मूथली हो गई. I had great support from my family, great support from my doctors. तो वो काफी इन्फ्लुएंस हो गया. एंड उसके बाद it became easier to even plan the second one, because the first one went well. It went smoothly. It went as per comfort. So बहुत important है कि हम अपने support system को strong रखें, हम अपने communication को strong रखें, हम अपने डॉक्टर से या अपनी फैमिली से जो भी हमारे मन में आता है हम क्लियरली बात करें, क्योंकि बात करने से ही आंसर्स मिलते हैं, और जब आंसर्स मिलते हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं. ठीक है. प्रोफेशनली आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर 16 years नाउ, सो काफी सारा ज्ञान है. एंड आई एम अ स्टोरी टेलर. मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सारी कहानियां सुनाती हूँ. सो forgive me if I talk a little bit more, but I will stay on the topic. प्लान ऐसा है कि अब we will talk about labor, birth, all the myths around it. And last 10-15 minutes we will keep open for questions. So आपकी तरफ से जो भी questions है आप chat window में या questions window में डाल सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी. एंड में मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भी दे रही हूँ, तो अगर आपको कुछ questions हैं जो आपके नहीं solve होते, रह जाते हैं,
तो आप प्लीज ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है? सो आप शुरू करते हैं, बिकॉज आप लोग संडे मॉर्निंग को आए हो, विच इज अ बिग डील. आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. थैंक यू वेरी मच. So let's get started without wasting further time on only introductions. Okay, all right. So, I mean, ये तो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ. This topic today is preparing for labor and all the methods that we can do as far as pain relief and breathing exercises is concerned. आप सब जो बैठे हैं घर में, अगर आप छोटे छोटे नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लीज बना दीजिए, बेशक गो अहेड. एंड जो भी हम बात करेंगे, अगर अब जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होंगी तो प्लीज आप मेरे साथ करते जाइएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए. और द नेक्स्ट टाइम जब आप कल परसों तरसों अगले हफ्ते 2 हफ्ते घर में करेंगे, जब तक आपकी डिलीवरी हो, ये आपके लिए इजी रहेगा. पहली बात जो है वो होती है प्रेगनेंसी. व्हाट इज प्रेगनेंसी? Obviously pregnancy means that I am happy, I am planning it, I have a new life. बहुत सारी expectations, उम्मीदें, आशाएं जिसको बोलते हैं ना, कि we start our journey of pregnancy with a lot of hopes and dreams. But लेकिन many times what happens is that pregnancy might not behave the way you want it to behave all the time. So this happens, but there are some things which can help. And the focus of today is going to talk about all these 5 areas. Your diet, your exercises, posture, which becomes a big question mark during pregnancy, lots of myths, and of course, ensuring that you have a stress-free mind. So we will first start with ensuring that you are going to eat healthy. Food is something ना बोलते हैं कि खाना makes a human being. जो हम खाते हैं वो हम हैं. जब भी when we ask a mother कि आप अच्छा क्यों खाने का सोचते हो, why is it that you have to focus on your nutrition, the main answer we will get is for my baby, because it is good for my pregnancy, it is good for my baby's development. But it is not only the baby's development, but it will also keep you healthy and it will also build your immune system. So all of these things are benefits. I can give you a whole list. It helps you to gain the right weight. It keeps your pregnancy hormones comfortable. It is going to ensure that the baby has a healthy weight. It will ensure that the baby's brain development is okay. On and on and on. There are multiple benefits. I don't need to sell you on the fact that you need to eat healthy. The main thing is that you remember. The main thing you have to remember is that you eat a healthy diet, right? And we're talking about a healthy, balanced diet. So a lot of people know that they are supposed to eat healthy. I think you also know, if you eat rajma and paratha, yes, you've eaten healthy. But the question is, have you eaten balanced? That is not happened, because where is the vegetable, right? So whenever you make your plate, you always think that I have to balance my diet. There are 5 components of a healthy diet. The first is your carbohydrates. So these, I will say simply, make it easy. These are your grains. When you choose the grains, choose a variety of grains. Not necessary कि आपको सिर्फ गेहूं की ही रोटी खानी है. आप नाचनी की रोटी खा सकते हो, आप जवर की रोटी खा सकते हो, कभी आप राइस ले सकते हो, कभी आप ओट्स ले सकते हो, कभी दलिया की खिचड़ी बना दीजिए. So make it a variety of grains. The second thing will be your vegetables. Vegetables हम कई बार ना काफी सारी लेडीज बहुत थोड़ा सा खाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक सर्विंग जो हम बोलते हैं वेजिटेबल्स का, कम से कम 100 ग्राम, तो एक बड़ी कटोरी सब्जी लंच और डिनर में लेना जरूरी है. उसके अलावा अगर कहीं और भी आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो तो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल. द थर्ड थिंग बिकम्स योर फ्रूट्स. जब आप फ्रूट्स लेते हो तो फ्रूट्स आर सपोज टू बी अगेन इन अ क्वांटिटी विच इज एटलीस्ट 100 ग्राम्स पर सर्विंग. तो जब मिड मॉर्निंग होता है, जैसे 11-12 बजे का समय, इस समय जैसे आप सुन रहे हैं, तो आप एक फ्रूट खा लीजिए, खाली पेट नहीं बैठिए. शाम के टाइम पे चाय वगैरह तो हम ले ही लेते हैं, बट उसके अलावा अगर भूख लग रही है तो फ्रूट्स ले सकते हैं उस टाइम पे. तो कम से कम 100 ग्राम फ्रूट 2 से 3 बार आप दिन में ले सकते हैं. ये आपकी डाइट के लिए हेल्दी है.
फ्रूट्स वेजिटेबल्स का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि कैलोरीज कम है उसमें, और उसमें फाइबर वगैरह आपको अच्छे से मिल जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो प्रेगनेंसी में नॉर्मली होता है काफी लेडीज को, ये आपको नहीं होगा. सो बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. जो नेक्स्ट चीज है इसको हम प्रोटीन्स बोलते हैं. अब प्रोटीन्स जैसी चीज को मैं क्या बोलूं, उसका वैल्यू ही अलग है. प्रोटीन से बेबी का बॉडी बनती है, बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट होती है, हम इसको सेल डेवलपमेंट बोलते हैं. तो प्रोटीन्स आपको लेना इज एसेंशियल. इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, सो देन लाइफ आपकी सिंपल है, बिकॉज आप चिकन ले लेते हो, आप फिश ले लेते हो, मतलब ये सारी चीजें आप ले लेते हो, आप एग्स ले लेते हो, तो इसमें द प्रोटीन कंटेंट इज वेरी हाई. बट ऑन द अदर साइड, अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन कैन बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट. My suggestion would be, even I am a vegetarian and I follow this even today. I'm not pregnant and I don't plan to get pregnant, but I follow this even today. Every time I eat, I always see, is there a protein in my diet? So my breakfast will have some protein. Then when I have my fruit, I will probably have some seeds with it. So then some protein goes in. In the lunch, I will have my dal, etc. So every time I eat, I always put a small protein snack or an item inside me. So this ensures that my diet remains balanced. Last but not the least is calcium items. So milk and milk products are helpful. They are a very rich source of calcium. So you should take 2 to 3 servings every day. Over and above that, it's very important that you limit your fats intake. That means ghee, oil, butter, less. I'm not saying zero, but less, because they are not going to do anything. They're only going to make you gain excessive weight. But in small quantity, they will help you to digest your food. So don't have excessive of these items. Drink lot of water, because water helps to digest all this, and water will also help to maintain your amniotic fluid levels. That's where your baby stays, right, in water. So we need to make sure that you have at least 10 glasses of water every day. 2 to 2.5 liters is what we recommend. एक चीज बहुत जरूरी है, बेबी आपके अंदर पूरा टाइम खा रहा है, right? Connected to the placenta, the blood is flowing 24/7. So therefore, we need to maintain your blood sugar levels, and if you don't eat for long intervals, then there will be a problem. So every 2 to 3 hours when you are awake, you should have some small healthy snacks. If I'm eating so healthy, do I still need to take that iron and calcium and all those supplements that doctor is giving me? Yes, yes, and yes. Do not skip on those. Sometimes we feel that iron से nausea होता है, I don't want to have it, ये हजम नहीं हो रहा है, मैं नहीं ले रही हूँ. 1 week, 10 days हो जाते हैं, we don't take the supplements. Don't do that. If something is not suiting you, please let your doctor know. There are many brands in the market. Your doctor will be able to give you an alternative. You have only 9 months to make the perfect baby. So let's not leave that opportunity unturned. The next thing is regular exercise. Now, first and foremost, I would really recommend that you should, before you start any form of exercise, you should always ask your doctor, because every pregnancy is different. Every pregnancy condition is different. What suits me may not suit you. What suits you may not suit the third person. So yes, exercise has a lot of benefits. It will prepare your body for labor. It will reduce aches and pains. It even helps you to relax. Exercise करने से रात को नींद अच्छी आती है. I mean, imagine that, because it releases the good hormones in your body, so you tend to sleep better. And there is a lot of research which says that when the mother exercises, it helps the baby also. सबसे safe exercise that we can recommend, which you do not need supervision for, is walking. But when you go for a walk, don't just फोन उठा लिया, वॉक पे निकले हैं, बातें कर रहे हैं, स्ट्रोल कर रहे हैं. That should not be the focus. The focus should be, I am going for a walk. So before you go, eat a small fruit, so you're not empty stomach. Drink water, carry your water bottle, wear shoes. Don't just go in the घर का चप्पल, because there is chances of injury, hurting your foot, etc.
You might fall, slip, all of those things. So wear good walking shoes. When you walk, don't get breathless, but at the same time, you shouldn't feel like having a big conversation. You shouldn't be able to talk like this the way I'm talking, tak, 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 you know. So that is the pace of walking. Don't try to meet a target. I have to walk for 1 hour every day. No, you listen to your body. If I feel tired today, it's okay to walk little less. Then on another day, maybe I'm feeling tired, but I just want to rest for a little while so I can sit for some time and then continue my walk. So you decide as per what your body is telling you on a particular day. Antenatal exercises can also be taken up, but this should be under guidance because there are lots of chances of injury that are there, and of course you don't want to make any mistakes. So you are fortunate your hospital has the facilities. You should take that up as an opportunity. Whatever exercises you do some breathing exercises as well, because breathing is going to be very beneficial in the overall pregnancy process also. These are some of the simple exercises which your antenatal consultant in the hospital will also teach you. From squats to butterfly position, leg raises, something simple as Kegels, because those are your pelvic floor exercises. Honestly, today आप Kegels सीख रहे हो, ये सिर्फ pregnancy के लिए नहीं है, ये आपको delivery के बाद भी करने चाहिए. Post-delivery Kegels will help your muscles to come back to normal shape. I had a baby 18 years ago, but I still do Kegels even today every day because as my body ages, my muscles become weaker. So therefore, I should exercise those muscles to ensure that the strength remains as long as I need them. And then of course, there are breathing exercises. So you should practice all of these things on a regular basis. The next thing that I'm going to talk to you about is your posture. Okay. During pregnancy, there are a few of these things that happen. Now, if you see my first picture, the picture on the left, if you notice, for all women, like, okay, let's not look at the picture first. Let's look at my hand. When you look at my hand, during a non-pregnant situation also, if you see your back, and you can check your husband's back, you can check your friend's back, anybody who's not pregnant, आप उनका back check कर लीजिए. सबको एक हल्का सा यहाँ पे lower back में curvature होता है. It is normal. Okay? अब जब pregnancy होती है तो यहाँ पे the stomach size is growing. When the stomach size grows, automatically this is what happens. You know, ये जो curve होता है वो थोड़ा और बढ़ जाता है. ना अगर आप ये लेफ्ट में जो लेडी है उसका पिक्चर देखोगे, उसने क्या कर रखा है, उसके शोल्डर्स भी ऐसे ड्रूप हो रहे हैं आगे की तरफ. एंड दिस हैपेंस क्योंकि उसका जो ब्रेस्ट साइज है वो चेंज हो रहा है. ब्रेस्ट साइज प्रेगनेंसी में आम बढ़ जाता है, नॉर्मल है, कुछ नहीं कर सकते उसका. ये ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से प्रेपरेशन हो रही है, हार्मोनल चेंजेस हैं, सो बिल्कुल ठीक है. बट लेकिन इसको हमको करेक्ट करना जरूरी है, राइट? तो क्योंकि हम अब ऐसे हो गए हैं तो ये जो पूरी स्पाइन है आपकी बिल्कुल टेंशन में है ऑल द टाइम. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि अपने पोस्चर को हम करेक्ट करें. इसकी वजह से आपको बैक पेन होता है. कई बार ऐसा होता है ना कि 3rd मंथ है, 4th मंथ है, फिर भी बैक पेन हो रहा है. एंड उस टाइम पे तो पेट तो बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर का पोस्चर है वो ऑलरेडी चेंज हो गया है. वो शोल्डर्स सारे नीचे की तरफ आ रहे हैं. तो आपको जब आप बैठते, जब आप स्टैंड करते हो तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एकदम सीधा पकड़ के रखिए, एकदम इरेक्ट. थोड़ा सा अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करना है और जितना हो सके अपने चेस्ट को थोड़ा बाहर की तरफ करना है. मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. शुरू में ऐसा लगेगा कि थकावट हो रही है और यूं करने का मन हो जाएगा, दैट इज ओके. बट लेकिन कॉन्शियसली अगर आप ये चेंज करना शुरू करोगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा. बैठते वक्त भी हम काफी गलतियां कर लेते हैं. हम बिल्कुल जैसे ना स्लाउच करके बैठते हैं, जैसे लेफ्ट वाली लेडी बैठी हुई है. हमको अपने आप को पीछे की तरफ प्रॉपर बैक सपोर्ट लेके बैठना चाहिए. गाड़ी में, सबकी गाड़ियों में मैंने बहुत देखा, छोटे छोटे पिलोज होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे 4 पिलोज होते हैं. आई थिंक ये पिलोज आपको अपने लिए जरूर लेने चाहिए.
सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं पर घर में रखने के लिए. एंड आई टेल माय मदर, प्रेग्नेंट मदर्स दिस ऑल द टाइम, वो 4 पिलोज का आप सेट ले लो, एक गाड़ी में रखो, एक हॉल के सोफा पे रख दो, एक अपने बेड पे रख दो, और एक कहीं पर भी जब आप जा रहे हो तो अपने साथ लेके जा सकते हो. तो जहां आप बैठो अपने बैक के पीछे आप ये पिलो पोजीशन कर दो ताकि आपकी बैक अच्छे से सपोर्टेड रहे और आपको बैक पेन की प्रॉब्लम ना हो. नहीं तो हम आम सोचते हैं ना, प्रेगनेंसी की वजह से हो गया, डिलीवरी की वजह से हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हो गया. फीडिंग करते वक्त भी मदर्स जनरली ऐसे बेंड कर लेती है, तो ये भी बैक पेन का रीजन हो जाता है. दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. इट इज वेरी गुड कि अगर आप अपने पोस्चर को सही करेंगे तो ट्रस्ट मी 90% आपके बैक पेन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बाकी 10% एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा. सो बैक पेन प्रेगनेंसी में या पोस्ट डिलीवरी या लॉन्ग टर्म भी क्यों हो, हमको अपनी लाइफ में पेन शुड नॉट बी अ इशू. प्रेगनेंसी में कुछ मिथ्स होती हैं जो हम आम सुनते हैं. एंड पहली बात तो होता है खाना, कि अब तो तुमको 2 के लिए खाना है, यू मस्ट ईट फॉर 2. सो नॉर्मली अगर मदर 2 रोटीज लेती है तो उसको बोला जाता है कि अब नाउ यू मस्ट ईट 4. सो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. वी शुड ईट फॉर हाउ मच वी नीड, आवर हंगर. रिमेम्बर, आप एक बात याद रखिए कि जो अंदर है, अब सिंपल सी बात है, ये मेरी डॉल है, नॉर्मल बेबी साइज है. अब ये सोचिए कि इवन फुल टर्म मेरे और इसमें कितना अंतर है. तो अगर मैंने 2 रोटी खानी है तो क्या ये भी उतना ही खाएंगे, क्योंकि ये तो छोटा है. तो इसीलिए ईट फॉर 2 नहीं होता, इट इज ईट अबाउट 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा. एंड अगर हम 300 कैलोरीज की आपको जस्ट रफ, एब्सोल्यूट रफ कैलकुलेशन दे दें तो 2 रोटीज, 1 bowl of vegetable, 1 bowl of curd. This will become total 300 calories जो आपको फुल डे में एक्स्ट्रा लेनी है. अब ये आप कैसे डिवाइड करते हो, इट्स अप टू यू. सो समटाइम्स मे बी यू टेक एन एक्स्ट्रा फ्रूट और यू टेक एन एक्स्ट्रा ग्लास ऑफ मिल्क. सो ऐसे करके यू कैन स्पेस इट आउट ड्यूरिंग द एंटायर डे. एक्सरसाइज की वजह से मिसकैरेज हो जाएगा, ये भी सही नहीं है. अगर आपकी प्रेगनेंसी इज कंप्लीटली हेल्दी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स. But always, very important, A, ask your doctor before you start any exercises. And 2, if there is any problem, stop. Don't continue, right? So if you're feeling that, oh, I'm uncomfortable, I'm feeling pain, and still I'm continuing, it should not be like that. You always stop, consult the doctors, and then continue. But otherwise, exercise should be done if everything is healthy. दूसरा flip side, or the other side, there are lots of mothers who will say, if I exercise every day, I don't have to have a normal delivery. Delivery has lot of things. उसमें बहुत सारी चीजें होती है. And we are going to talk about labor and delivery. So you will understand कि इतने components होते हैं कि कई बार हमने सब किया जैसे जैसे हमको बोला गया, यही खाओ, यही करो, ऐसे ही बैठो. I've done everything, फिर भी I had a cesarean. So you feel very disheartened, you feel very demotivated, and then you feel low. That is not a good idea. So I will talk to you about labor in a lot of detail so that you understand that there are so many things which will contribute to your labor experience, so that don't stress yourself out and overdo even on the exercising. So don't underdo. घर बैठना नहीं है, बिस्तर पे पूरा टाइम बैठना नहीं है, और सिर्फ खाना नहीं है, और पूरा टाइम वॉक करना है, वो भी नहीं करना है. Eating ghee will make my labor easy. That is also not true. रोज हमको 2, 4, 6 चम्मच रात को गरम दूध और घी दिया जाता है, ये बोल के कि इससे आपकी डिलीवरी आसान हो जाएगी. ऐसा भी नहीं होता, राइट? सो घी थोड़ा सा ऑन द रोटी, आपके तड़के में, बिरयानी के ऊपर. आई रिमेम्बर बिरयानी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, दे आर सो यमी. सो उसके ऊपर हमने लगा दिया तो इट्स ओके. बट लेकिन ऐसे नहीं है कि बहुत सारा घी फुल टाइम वी हैव टू कीप ईटिंग घी. सफेद चीजें खाने से बेबी गोरा हो जाएगा, ये भी नहीं होता. एंड दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू. जो स्किन है, फेयर स्किन या डार्क स्किन, इट्स कम्प्लीटली जेनेटिक. एनीथिंग जो आप खाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. एंड बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है. वन ऑफ माई क्लाइंट्स वाज टोल्ड कि सुबह उठते ही द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू शुड ईट समथिंग व्हाइट एंड यू विल हैव अ फेयर बेबी.
and she was really keen on having a fair baby. So she decided that every morning she will follow it. Now, if she had had a cup of milk in the morning, I would have probably just smiled and said, okay, it's all right, it's a myth, but it's fine, you can continue doing it. But what she ended up doing was every morning she would get up and she would eat a spoon of sugar and white, and that was her idea of getting a fair baby. So obviously that is not healthy. She was eating a lot of calories and they were making her put on weight. So sometimes these myths are fun, they're interesting, but sometimes they can also cause harm. So always be practical, always check with your doctor if you have any doubt about something. Don't follow anything blindly. Back pain is not normal during pregnancy and post-delivery. I've already explained why back pain happens. So अगर आप अपने posture को संभाल के रखेंगे, अगर आप थोड़ी बहुत exercise incorporate करेंगे, active रहेंगे, तो back pain आपको नहीं होना चाहिए pregnancy और post-delivery में. बहुत important है और बहुत जरूरी है कि आप relaxed रहें. आपका माइंड है जो मतलब स्ट्रेस क्रिएट करता है. द स्ट्रेस हार्मोन्स आपके बेबी के पास भी चले जाते हैं बिकॉज हार्मोन्स तो ब्लड में रहते हैं और ब्लड तो बेबी के पास भी जा रहा है. तो बेबी को भी अफेक्ट हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे. हमें छोटा मोटा स्ट्रेस इज नॉट अ प्रॉब्लम. टुडे देयर इज नो मेड, टुडे वी हैव टू वर्क मोर इन द हाउस, ऑल ऑफ अस आर डूइंग दैट, दिस इज नॉर्मल. But if it is excessive, if it is something which is not letting you sleep, if it is not letting you function, if you're crying all the time, then you should seek help because then it is a problem and some attention will be required. But otherwise, in general, you should practice deep breathing, relaxation, meditation on a daily basis. If there is someone or situations जो आपको बहुत नेगेटिव फील कराते हैं, ऐसे होता है ना, मतलब कुछ लोग होते हैं जो हमको नेचुरली स्माइल कराते हैं. हम लाइक उनके साथ रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बस दिस इज फन एंड वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स. But on the other side, there are people who are like, oh my God, I can't deal with these people. And all the time you're irritated around those people. If you can, if it's possible, you should avoid such people and you should avoid such situations. Automatically you'll smile. The more you are with people who make you happy and relaxed and have fun, you will automatically start being a more positive person. All right, and now we'll come to our main point and focus that all of us are waiting for, which is labor. So there are a few things that happen even before labor starts. So I should deal with those things as well. So the first thing that you will experience is what we call Braxton Hicks contractions. So when we say Braxton Hicks contractions, we call them fake contractions also. But it's not necessary that they are fake. They are definitely present. They are visible. They are not something which a mother is imagining, right? But the reason we call them fake is because they do not affect the mouth of the uterus. They do not have any impact on the opening of the uterus. That is why we call them fake contractions, but they are there. Braxton Hicks contractions generally very short होते हैं, they're a few seconds at a time. Generally they are painless and they can happen at any time of the day. It's not that there is a pattern or there is a rhythm. Sometimes women don't even realize that they are having it because इतने mild होते हैं, इतने sporadic होते हैं कि we don't come to know that Braxton Hicks contractions are happening. The second thing is lightening. And I'm going to give you two things. First, I'll talk about the actual medical side of things. This is the pelvis. This is what is there in everybody's body, yours and mine. During pregnancy, the uterus has grown and now the baby is somewhere high up here. When it becomes closer in the 9th month, there is very little space. So the baby starts moving down, right? Now when the baby moves down, here the head is still out. So as you can see in the picture on the right hand side, the head is still out. And then slowly the head moves down, right? The head moves down. And if you can see the image of the woman on the left side, when the head is still out, her stomach is high up. It is almost near her breasts, near the ribs. But if you see the other picture where the head has engaged
and gone into the pelvis, then the mother's stomach is a little bit lower. And इसमें ना दादी माँ के नुस्खे भी है. दादी माँ बोलेगी पेट नीचे आ गया, पेट हल्का हो गया. हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं. हम उसको सोचते हैं कि ये दादी माँ तो कुछ भी बोलती है, नानी तो कुछ भी बोलती है, बट एक्चुअली ये सही है. कई बार ये जो एक्सपीरियंस्ड आईज होती है ना, वो आपको देख के बता सकती है कि बस अब कभी भी हो जाएगा, पेट नीचे आ गया, बेबी सेटल हो गया. तो उनका बोलने का तरीका अलग है, इसलिए हम कई बार उनको मानते नहीं है. तीसरी चीज जो होगी वो आपके सर्विक्स में चेंजेस होंगे. तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस है, उसका जो ओपनिंग है, जो वेजाइनल साइड पे है, वो बिल्कुल ऐसे होता है, लंबा सा, लॉन्ग, थिक एंड टाइटली क्लोज्ड. हम इसको लॉन्ग, थिक एंड टाइटली क्लोज बोलते हैं. जब बेबी का निकलने का टाइम होता है, जब डिलीवरी का वक्त आ जाता है, तो ये जो सर्विक्स है, हम इसको सर्विक्स बुलाते हैं, ये बिल्कुल छोटा होना शुरू हो जाता है. जैसे ये छोटे 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 होता जाता है, तो हम इसको शॉर्ट, थिन, सॉफ्ट, प्लायबल, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं. ये आपको नहीं पता चलेगा, ये आपके डॉक्टर को पता चलेगा, बट ये चेंजेस आपके डॉक्टर चेक करते रहेंगे कि सर्विक्स में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं. इससे पता लग जाता है कि डिलीवरी का समय नजदीक है कि अभी टाइम है. ये जो ऊपर की दो चीजें, अगर पेट आपका बहुत जल्दी नीचे आ जाता है, तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए. अगर ऐसी कोई भी साइन 37 वीक से पहले आपको महसूस होती है, तो आपको डॉक्टर से 100% कंसल्ट कर लेना चाहिए, घर नहीं बैठना चाहिए. लेबर से 2 दिन पहले, मतलब 12 घंटे पहले भी हो सकता है, पर लगभग 48 से 72, 48 to 72 आवर्स पहले थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है, बट इसको जनरली हम म्यूकस प्लग बोलते हैं. ये ब्राइट रेड पीरियड के जैसे नहीं होनी चाहिए, एकदम लाइट पिंक, ब्राउन, जैसे वैजिनल डिस्चार्ज में ब्राउनिश पिंकिश कलर आ जाता है. सो ये होता है आपका म्यूकस प्लग और ब्लडी शो. कई बार women will have loose motions और multiple bowel movements. So डिलीवरी के पहले 2 दिन पहले बार बार बाथरूम जाने का मन होता है, जो पास motions, which is normal. So इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है. कई बार बैक पेन होता है, एंड ये बैक पेन स्पैज्म के जैसे बिल्कुल जकड़ के पेन होता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है फिर, और उसके बाद बेबी 2, 3, 4 घंटे कुछ नहीं होता. फिर एक बहुत ही इंटेंस पेन आता है विच फील्स के अब मुझे बैठ जाना है. तो ये भी नॉर्मल है. अब इतनी तकलीफें हो रही है, बट इसके अलावा एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होती है. वी फील दैट ओके, अब तो आई हैव टू कुक, आई हैव टू शॉप, आई हैव टू बाय दिस, आई हैव टू क्लीन माय हाउस, आई हैव टू डू ऑल दोस थिंग्स. सो एनर्जी लेवल्स आर वेरी हाई इन द लास्ट 48 आवर्स प्रायर टू लेबर. आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा रेस्ट कर लो, बिकॉज डिलीवरी में थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी. तो इतनी ज्यादा एक्टिविटी to do a lot of things, you should rest, you should sleep, you should eat well, you should just prepare and relax for the next phase, that is going to be the labor process. जब labor starts, so most important is regular onset of your contractions. तो ये आपको फील होगा पीरियड क्रैम्प्स के जैसे, बट लेकिन थोड़ा इंटेंसिटी ज्यादा होती है. पीरियड क्रैम्प्स किसी किसी को नहीं होते, किसी किसी को बहुत होते हैं, किसी किसी को पता भी नहीं चलता. सो इट्स नॉर्मल, बट ये पता लगेगा. यू विल कम टू नो. मेनी टाइम्स मदर्स आस्क मी दिस क्वेश्चन, how will I know? Will I come to know? And I have only one answer. I always tell them this, God has designed it like this, that when labor starts, we women should come to know. Otherwise, I think you'll agree with me. Women, all of us, we'll be busy doing things. If it had been me, I would have been busy taking a class, and then I would have said, oops, I think I'm going to have a baby. So that's how women are. So God wants us to stop, get to a safe place, and have our baby safely. Which is why He lets us know that, you know what, you're in labor, stop. So that's why these pains happen, and it's normal. Your body is working hard to deliver the baby. There are a few things that you have to monitor when you start feeling the contractions. Make a note of the timing, the start time and the finish time. Again, the start time and the finish time.
keep writing this down, maybe 3-4 contractions. When you realize that the contractions are coming closer and closer, मतलब वो जो contractions के बीच में समय है वो कम हो रहा है, या तो जो contractions का खुद का समय है शुरू से अंत तक वो बढ़ते जा रहा है या आपका पेन बढ़ते जा रहा है, so you know that ये real labor है और मुझे अब डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, हॉस्पिटल कब जाना है ये पूछ लेना चाहिए. Normally we recommend कि जब आपकी contractions about 20 minutes apart होते हैं, is a good time कि you should plan and you should be in the hospital. Most mothers will take more time also to deliver the baby, so it is okay. But again, once more, check with your facilities what they would prefer and what time they would want to come. Sometimes what happens is you're living right next to the hospital. You know it is the middle of the night, there is no traffic, you're a low risk case. Maybe the doctor will let you be at home a little longer. But when you call them that, okay, I think labor has started, they will ask you all the relevant questions and accordingly guide you as to when you should come in. At any time, even if there are no contractions and if you feel liquid, water leaking, then that is your water bag is broken and you should then go to the hospital. That is very important. अगर आपको टेंशन हो रही है या आपके हस्बैंड को टेंशन हो रही है तो भाई बेटर है कि आप हॉस्पिटल आ जाओ, बिकॉज घर पे टेंशन लेके बेटर है कि यू बी इन अ सेफ सिचुएशन सो यू फील रिलैक्स्ड, बिकॉज द मोर रिलैक्स्ड यू आर the faster labor will progress. If the hospital is very far away, right? I mean, I remember I had to come to Ludhiana. I had to land in Chandigarh and then drive 2 hours to reach Ludhiana. So if that's the situation that you need that much time to get to your hospital, then you should go in early because you don't know how labor will progress. It's not possible for anybody to tell you that your labor will last for 4 hours or 10 hours or 2 hours. It's not possible. Sometimes it can start slow, then it can become really fast. So that is something which we can never predict. When you come to the hospital, you will be checked by the doctor on duty. If it is your labor, only then they will admit you. Otherwise, they might tell you go home, because what can we do, right? They will monitor you and they will monitor your baby. And then generally labor is allowed to progress on its own. There really is nothing that that we will be doing or your doctors will be doing from their end. Unless there is an emergency requirement or any condition which requires help. First stage, as I already told you, the cervix is first going to become absolutely thin. So from that long, thick and tightly closed cervix, it now becomes a nice, short and paper thin cervix. And the next thing the cervix is going to do is it is going to dilate. It is going to open up. So when the doctor checks you and one finger, it's kind of called 1 centimeter. So this cervix will be checked periodically during labor. And every time the doctor checks you, your cervical dilation, how much the cervix is opened, will be monitored. The cervix has to open to 10 centimeters, which is the size of your baby's head. And even this, I mean, the baby does have to navigate this also. It's not completely super easy. But nevertheless, this is how the body is designed and this is what we have to wait for. In the second stage of labor, the baby is delivered. So the contractions, the uterus will start pushing. Your doctor will guide you how to push and you will be then pushing the baby out with your own steam and your own energy. Labor is not over till the placenta is delivered. Placenta is the organ which is supporting the baby inside. It gives the nutrition, it gives the oxygen. It is the baby's mother in the womb. And now that the baby is out, the placenta has no business. So it also separates and leaves the womb in the third stage of labor. Basically, when you're trying to do pain management during labor, the most important thing to remember is stress causes pain. So the more relaxed you are, there is less stress, there is less pain. There is less pain, so obviously you will experience a faster labor progress.
And therefore, the best labor management tool that we can actually teach is stress management. And then now I have some magic tricks, right? Because after all this, how am I going to manage it? There are lots of pharmacological methods and your doctor will be happy to explain them to you, and they're perfectly safe. So you can decide if that is something that you would like to go for. But we can teach you some natural remedies that we would recommend for mothers during the labor process. The first is try and avoid screaming. Okay, because if you're screaming, you're going to be tightening yourself up. And now I'm going to ask you to do this little exercise with me. I'm sure you're surrounded by your family members and you're going to be worried that I'm going to look so funny and all of that. Don't worry. It's okay. It's all right. We'll do it together. Okay. So first just sit back comfortably, sit relaxed. Keep your facial muscles completely loose, limp, as neutral as possible and completely relaxed. Okay. The second thing I want you to do is while you're keeping your face completely relaxed, think about your vagina. Think about your vaginal muscles and tell me, or don't tell me, but put a note in yourself what it feels like. Now the next thing I want you to do is smile. Okay. So keep your eyes closed, loosen out your shoulders and smile. Give yourself that big smile. The world is an amazing place. I'm going to be a mom, you know, those happy feelings. And now make a note and think what your vagina feels like. Okay? Third thing that we're going to do is we're going to keep our eyes closed and we're going to frown. We're going to be really grumpy. I'm really angry. Okay? And now think what your vagina feels like. Did it feel like it tightened up? Did it feel like it pulled in? And then the fourth thing that I would like you to do is scream. So we go, right? Now if you did not do that, then please do it later. Because if you do a lot of screaming, it is going to definitely tighten up your vaginal muscles, which is going to slow the whole delivery process down. So try it for me once at home when you are alone, and you will understand that whatever is happening on your face happens in your vagina also, which is a very, very important thing for mothers to understand. The next is breathing. Breathing is not only going to give oxygen to the baby, but it is also going to give oxygen to your muscles. So when we breathe during labor, we have to breathe short breaths. So normally during pregnancy, I would recommend that you are going to do a lot of deep breathing. But now what you will do is short breaths. Let me show you a pattern for a few seconds and then I'll ask you to do it with me once. Okay? So basically it's breathe in through the nose, blow out through the mouth. It's short breaths only till the chest, and we're not using our abdominal muscles as much as possible. Okay? So keep the concept in mind and let's try it. I'll show you first and then I'll guide you through it. So it's short breaths, so in through the nose and out through the mouth. Right? It's as simple as that. I'm always breathing and blowing. It's breathe and blow and it's short breaths. Okay? So now let's do a very short contraction together and then I'll tell you how to practice this later at home as well. Okay? So close your eyes. Relax your body. There's no pain right now. Imagine a contraction is coming on. Prepare your body. Take a deep breath in. Exhale. Breathe in through your nose. Blow out through your mouth. And the contraction is disappearing. So take a deep breath in and relax. Okay? So that is what is called a contraction breathing. Contractions can last for 60 to 90 seconds. Now what do I want you to do at home? When you're at home and you're practicing for it, and I would recommend this for all mothers who are 28 weeks and above. Before that, it might be a little too early. So every day, what you can do is sit down comfortably,
keep a clock in front of you. Plan for a minute. Take a deep breath in, exhale. Do the blow in, out, in, out. Do it for a minute. Stop. While you're doing it, tell yourself, I can feel the contraction coming on. I'm using my breathing to control it and etc. Give yourself that suggestion in your mind. That's very important. Once the 1 minute is over, then you will just relax and breathe normally. Try and keep your thoughts positive so that you can conserve energy for the next contraction. I would recommend doing 5 such contractions every day. So it will be good practice with all the auto suggestions as well. So as I said, it's going to give you all of these benefits. आपको distract करेगा, आपके muscles को oxygen मिलेगा, so there will be less pain. Most important, baby will get oxygen. Therefore, there will be less chances of fetal distress. And obviously, if you're distracted, you will be able to manage your pain much better. Visiting the bathroom can be really, really helpful to pass urine because it will empty your bladder and आपके uterus को ज़्यादा जगह मिलेगी, baby को ज़्यादा जगह मिलेगी नीचे आने के लिए. So, plus when you visit the bathroom, आप urine pass करते हो तो आप बिल्कुल relax हो जाते हो. Otherwise, it's like, you know, we're tensed. So, if possible, every 45 minutes to 1 hour, visit the bathroom to pass your urine. If possible, don't just lie down. You know कि hospital का bed मिल गया तो लेट गए. थोड़ा सा उठ के भी बैठना है. Not all the time, but जितना आप उठ के बैठोगे तो आपको gravity का advantage भी मिल जाएगा. So that is also very, very beneficial. दूसरा ये होता है कि जो आपका बर्थ कनाल है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है. जब आप लेटे रहते हो वो ऐसे नहीं है, वो थोड़ा tilted upwards है. So बेबी को इस तरह से बाहर आना है. So if the mother is sitting upright, थोड़ा सा सीधा करके बैठी हुई है, so it becomes a lot easier for the baby to move down also. थोड़ा सा आप move करेंगे तो आपके लिए अच्छा है. If you can walk around, that's great. If you're not able to walk around, then you can at least, you know, sit up in bed, turn to the left, turn to the right. So some kind of movement is also very welcome because that will also help to shake the baby down and it doesn't keep you static. It also keeps you involved and it keeps you motivated and all of the positive thoughts that come with the whole labor process. Most important है कि आपको relax करना है, आपकी breathing exercises try करनी है, मसाज यूज कर सकते हैं. मतलब आपके अगर पार्टनर या कोई फैमिली मेंबर आपके साथ है तो जहां आपको कंफर्टेबल फील करे, बैक पे, लोअर बैक पे, हेड, शोल्डर्स, लिटिल बिट ऑफ जेंटल मसाज इज पॉसिबल. इमेजरी जिसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव यू नो एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीजें आप उनके बारे में सोचें. अगर आप एक्यूप्रेशर जानते हैं तो एक्यूप्रेशर भी यूज किया जा सकता है. डाइवर्जन टेक्निक्स हम इसको बोलते हैं कि आपका माइंड कैसे डाइवर्ट होता है. अभी मेरी एक क्लाइंट थी, उसको फ्रेंड्स जो सीरियल आता है बहुत पसंद था, तो उसने पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर ले लिया, पूरे फ्रेंड्स का वो यू नो सेट ले लिया और वो ले गई साथ में लेबर के लिए बिकॉज शी सेड मुझे हंसना है. तो ये सबके ऊपर अलग अलग है. किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को कोई चांट करना चाहता है, मतलब यू नो अपना जाप जो होता है वो करना चाहता है. तो जो भी आपको ठीक लगता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट करने के लिए आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. तो ये है जैसे लोअर बैक मसाज हो गई बिकॉज जनरली बैक पे थोड़ा सा पेन होता है लेबर के टाइम पे, तो जो आपके पार्टनर है वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं. शोल्डर नेक मसाज, हल्के से एब्डोमिनल मसाज भी की जा सकती है अगर मदर को कंफर्टेबल फील हो रहा है. खाने पीने के बारे में लेबर के टाइम पे प्लीज हमेशा डॉक्टर से पूछिए बिकॉज अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन की एक्सपेक्टेशन है तो वी डोंट लेट यू ईट एंड ड्रिंक टू मच, बट हल्का सा थोड़ा थोड़ा पानी आप सिप कर सकते हैं. हाई शुगर फूड्स जैसे जिसपे ग्लूकोज या ग्लूकोज वाटर या छोटे छोटे स्वीट्स, ये आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन कर सकता है. बहुत बड़ी मील्स जैसे एकदम हैवी फैंसी मील अगर आपने खा लिया विद लॉट ऑफ कैलोरीज एंड कार्ब्स एंड ऑल ऑफ दैट, देन इट कैन कॉज वॉमिटिंग आल्सो बिकॉज पेन होगा तो वॉमिटिंग होने के चांसेस होंगे अगर पेट बहुत फुल है तो. हॉस्पिटल में अभी फिलहाल
सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए. इट इज नॉट ओनली फॉर यू बट इट्स ऑल्सो फॉर द सेफ्टी ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ, फॉर द अदर पेशेंट्स. सो ओनली यू एंड योर पार्टनर शुड गो टू द हॉस्पिटल. अपनी सारी चीजें जो हॉस्पिटल बैग में आपको डालनी है पहले से संभाल के डाल दीजिए, ताकि आप अपने हस्बैंड को बार बार घर ना भेजना पड़े आपको इन चीजों के लिए. डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में विजिटर्स ना आए तो इट्स ऑलवेज वेरी वेलकम. एंड प्लीज घर पे भी विजिटर्स को इस समय एटलीस्ट बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज यू आर ऑल्सो रिकवरिंग, योर इम्यून सिस्टम इज ऑल्सो लो एंड यू हैव अ स्मॉल बेबी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीजों का आप ध्यान रखें. जो भी आपके बेबी के वैक्सीनेशन वगैरह हैं डिस्चार्ज से पहले ही करवा लें, एंड ये तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स भी संभाल रखेंगे, ताकि आपको दोबारा से हॉस्पिटल भाग के नहीं आना पड़े, मतलब रिपीट विजिट्स नहीं करनी पड़े. कोई भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके लिए और बेबी के लिए ये आपके पास होने चाहिए, ताकि आप घर में अगर आपको कुछ कंसल्टेशन की जरूरत पड़े तो आपको कंसल्टेशन बुक करने में कोई दिक्कत ना हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि बर्थ, ये जो आपका नया मेहमान आ रहा है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, एंड इफ यू वेलकम इट विद पॉजिटिविटी it will be an amazing experience. ये वाला सेशन आपके लिए कॉड लाइफ की तरफ से और सुमन हॉस्पिटल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है. एंड कॉड लाइफ इज अ लीडिंग स्टेम सेल बैंक ऑफ इंडिया. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोग ने जिन्होंने भी अटेंड किया है, you will be getting a gift voucher. So the Cod Life team will be getting in touch with you. आपको कॉल्स आएंगे उनकी तरफ से, आपको ये वाउचर दिया जाएगा. एंड अगर आप कॉड लाइफ की प्रेजेंटेशन लेते हैं फॉर स्टेम सेल बैंक, तो ये आपको एक प्रेगनेंसी केयर प्रोग्राम जो मेरी तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा. सो जब आपको ये कॉल आए तो प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बिकॉज ये आपकी लिटिल गिफ्ट है. थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर सेशन एंड आई होप दैट हम आपको इसमें आपकी पसंद की इंफॉर्मेशन दे पाए हैं. सो कॉड लाइफ के एग्जीक्यूटिव्स जो इंडिया की लीडिंग स्टेम सेल बैंक है, आपको कांटेक्ट करेंगे इस सेशन के बाद with all of this extra little gifts and perks that we have for you. And मेरी तरफ से तो थैंक यू. अगर आप देखोगे तो मैंने अभी वेबसाइट एड्रेस डाल दिया है, उसके द्वारा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस भेज सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी दे दिया है आपको, तो आप सोशल मीडिया पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. एंड यूट्यूब चैनल का भी लिंक आपको दे दिया है. मैं यहाँ पे रेगुलरली वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ. सो इफ यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, यू विल बी गेटिंग कांस्टेंट अपडेट्स फ्रॉम मी. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर आपके कोई भी क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस के टैब में जैसे आशुतोष ने मैसेज डाला हुआ है कि आप क्वेश्चंस के टैब में अगर क्वेश्चंस डालेंगे तो वी विल डेफिनेटली एड्रेस ऑल द क्वेरीज बिफोर वी क्लोज द सेशन. So I think there are a lot of questions, but I have to. Yes. So the first question that I have is dry fruits okay for me? क्या मैं अखरोट, आमंड, काजू ये सब ले सकती हूँ? Yes, आप ये सब ले सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में. तो जनरली जब हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, हम बोलते हैं कि एक फिस्टफुल, मतलब एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स, उससे ज्यादा नहीं लेने चाहिए. कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, जैसे वॉलनट्स वगैरह है. अगर आपको थायराइड की इशू है तो हम अवॉइड करवाते हैं. तो अगर आपको प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई ब्लड टेस्ट में इश्यूज नहीं है, तो एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट आप रेगुलरली दिन में ले सकते हैं. Where is Dr. Vani? She's right here. I'm right here. She's right here. If you have any questions for her, she'll also be happy to answer them.
Dr. Vani, Dr. Sidhu. You can ask. I can't see the questions, Shonali. So if Question. They haven't somebody written can- anything specifically, but I will read the question. Okay, so ma'am, please explain contraction breathing again. Okay, so I will explain this again. You imagine that a contraction is coming on. Please do it with me. Imagine that a contraction is coming on. Keep your eyes closed. Take a deep breath in. Exhale. And then now breathe in through your nose and blow out through your mouth. Make it short breaths. When the contraction disappears, take a deep breath in. Relax. You imagine that a contraction is going to last for at least 1 minute. So you do it for about a minute. In the beginning, if you feel that it is too stressful, start with 15-20 seconds and slowly build yourself up. I always suggest that don't do before 28 weeks because before that it doesn't make sense. After 28 weeks, you can start practicing. I have twin pregnancies. Tell me some do's and don'ts. I think I will ask Dr. Vani to answer this. Do you have any do's and don'ts for a twin pregnancy? Yeah, sure. For twins, see, your uterus is doing twice the amount of work and it is going to become heavier soon, right? और जब किसी भी organ को काम ज़्यादा करना पड़ता है तो common sense है, खुराक भी हमें वैसी लेनी चाहिए, है ना? थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटीन खानी चाहिए और ज़्यादा देर तक अगर हम स्टैंडिंग पोस्चर में रहते हैं तो ग्रेविटी जो है ना, आपकी हेवी यूट्रस को ग्रेविटी की वजह से वो ड्रैग, वो पुल, वो डिस्कम्फर्ट भी ज्यादा महसूस होता है। एंड वी आर ओनली वरिड, ट्विंस में हमें चिंता क्या होती है कि प्रीमेच्योर लेबर, क्योंकि यूट्रस बड़ा हो गया है तो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने की उसकी टेंडेंसी रहती है, तो प्रीटर्म लेबर एक फियर होता है और उसके लिए अगर हम अवॉइड करें प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें, प्रॉपर प्रोटीन लें, we make sure that we take a lot of fluid in our diet, it really helps. And another thing is that अगर आपको बहुत ज्यादा contractions आती हैं, you must consult your doctor. कभी कभी हमें यूट्रस को रिलैक्स और क्वाइट रखने के लिए मेडिसिन भी ऐड करनी पड़ती है ना ट्विन प्रेगनेंसी. Another thing is ट्विन प्रेगनेंसी के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने का भी खतरा ज्यादा होता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, ओके, एंड इवन जेस्टेशनल डायबिटीज. So food is a very, very important area to focus on. हम क्या खाते हैं? मैं हमेशा पेशेंट्स को एक ही बात बोलती हूँ, इधर से खाओ, इधर से नहीं. यहां से सोचो, what am I putting in my mouth? Right? Few unnecessary calories, unnecessary high carb diets, fried foods, ये बिल्कुल पैकेट फूड्स, जो एक पैकेट से चीज निकलती है उसको अवॉइड करो, फ्रेश खाओ. ये किसी भी प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है, बट क्योंकि ट्विंस में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सो यू हैव टू बी डबली केयरफुल, ओके. एंड स्ट्रेच मार्क्स बहुत पड़ते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में, सो आई थिंक कीप योर एब्डोमिनल स्किन प्रॉपरली हाइड्रेटेड, अच्छी क्रीम्स हैं, ऑयल्स हैं, है ना. सो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप ऑन डूइंग दैट एंड प्रे. Prayer is the best thing because stretch marks come. They depend on the tendency of your skin to stretch and break. Okay. I still have mine. I call them the silver medals of pregnancy. I agree. I call it my pregnancy badge and I'm proud of them. I have 2 kids and I can show proudly, no problem. Right. Anyway, I think the next question I have is how much water is required per day. We normally say 2 to 2.5 liters, 8 to 10 glasses. If you have a very energetic lifestyle, मतलब आप बहुत ज़्यादा hectic lifestyle है तो थोड़ा ज़्यादा, but drink to thirst. बिल्कुल भी जीरो मत करिएगा. 8 से 10 ग्लास शुड बी गुड. ओके मैम, दिस इज ऑल्सो आई थिंक क्वेश्चन विल बी फॉर यू. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन VBAC? On VBAC, vaginal birth after cesarean. Okay. So first of all, it is important to understand why did the cesarean happen in the first place in the previous pregnancy. अगर इट वॉज फॉर ए रीजन जो कि दोबारा से रिकर करेगा अगली प्रेगनेंसी में, तो नेचुरली चांसेस ऑफ सी सेक्शन आर हायर इन योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी. दैट मीन्स अगर आपकी पेल्विक बोन टाइट है, राइट, तो वो तो चेंज नहीं होने वाली, तो अगली प्रेगनेंसी में आपको ऑब्वियसली दोबारा से सी सेक्शन ऑप्ट करना चाहिए. यू हैव लेबर्ड, थिंग्स हैव नॉट हैपेंड, you should opt for a C-section in the next pregnancy. But
If in the previous pregnancy, the reason was something like a fetal distress, a low-lying placenta, breech position, जो कि शायद इस प्रेगनेंसी में ना हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें. Allowing normal delivery after a previous cesarean, we have to take care of a few things. One is your pelvis should be adequate. Second, the baby should not be too large. Because what happens, now your uterus is scarred. आपके यूट्रस पे कट है, वो एरिया थोड़ा सा वीक है बाकी के यूट्राइन वॉल से. अगर हम उस यूट्रस को ओवर स्ट्रेस करेंगे तो वो जो वीक एरिया है वो खुल सकता है, डेहिस हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है. सो केयरफुली असेस्ड वजाइनल डिलीवरी, एक केयरफुल असेसमेंट के बाद अलाउ की गई हुई वजाइनल डिलीवरी हो सकती है प्रीवियस सिजेरियन के साथ, provided your doctor seems that you are fit to go ahead with it. I do not advocate difficult vaginal deliveries after previous cesarean because उसमें complications होने के चांस ज्यादा होते हैं. See, अगर स्कार रप्चर हो जाता है ना, तो उसमें जो salvage situation होती है वो बड़ी पेनफुल होती है. You can lose your uterus and you can lose your baby. But अगर आप प्लान करके करते हो और आप केयरफुल मॉनिटरिंग करते हो लेबर में, सपोजिंग आई एम अलाउइंग यू टू हैव अ नॉर्मल बर्थ after previous cesarean, my duty as a obstetrician will become double to just check at all times that there is no problem in the previous scar. And at any point of time during labor, अगर मुझे लगता है कि वो scar give way करने के chances हैं, तो हम लोग immediately convert करते हैं और C-section करते हैं. So I hope I've been able to, answer your queries related to this particular issue. Doctor's been very, very clear on it. Basically, as she very rightly said, it really depends on your previous experience and why the previous surgery was done. So that will guide you as to what, and again, it's, very, very worthwhile to speak openly to your doctors. We are not scary people. So, you can talk to us openly, air your fears, and we'll answer them with that much more enthusiasm if people are asking us questions. I have a question. Someone wants to know if climbing stairs is normal. Yes. Please don't run up and down the stairs. Go up slowly, come down slowly. Don't get breathless. As long as pregnancy is normal, you can do all normal activities. I'm going to tell you something that my doctor had told me, and I remember it even after so many years. She said, if you can do some activity holding a one-day-old baby in your arms, you can do it during pregnancy. So if your pregnancy is normal, and you're climbing upstairs with a one-day-old baby, you can do it during pregnancy also. Okay, then I have, I don't know, 10 to 15 times a day. It depends on how many floors you're climbing. If you're climbing the Eiffel Tower 10 to 15 times a day, then no. But if it's one floor and if it is little bit up and down, it's okay. Dr. Vani, I think you can take this one. In normal pregnancy, is intercourse, sex allowed? Okay, so intercourse is a very normal thing, okay, and the only, again, disclaimer यहाँ पे क्या होता है, during intercourse uterus में normal से ज़्यादा contractions आते हैं, है ना, और हमें डर किस बात का होता है थोड़ा सा कि contraction से कभी-कभी cervix का mouth नहीं open हो जाए, but nature has not intended this. Remember, आपकी pregnancy में हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो आपके यूट्रस के माउथ को टाइट रखते हैं. इट इज नॉट दैट इजी. सो आई अलाउ इंटरकोर्स इन प्रेगनेंसी. आई जस्ट गिव अ फ्यू डायरेक्शंस दैट डोंट मेक इट टू फ्रीक्वेंट, डोंट कीप इट जेंटल एंड मेक श्योर दैट यू डोंट गेट एनी वेजाइनल इन्फेक्शन. आई थिंक इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब आपका बेबी बम्प बहुत बड़ा नहीं है, it is not very uncomfortable. Right? And in fact, a lot of women tell me they enjoy it more during pregnancy because of the hormones being up, which is fine. Okay? And third trimester में जब आपका baby bump थोड़ा बड़ा हो जाता है and it is uncomfortable to have intercourse, that is the time when you can kind of, take a call and maybe abstain. But जहाँ पे conditions होती हैं, previous miscarriage, previous preterm delivery, यूरिनरी इन्फेक्शन, ये जो सारी कंडीशंस होती हैं, इनमें मिसकैरी करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है.
So maybe these would be the conditions where your doctor will say don't do it. Also, in your ultrasound, if you have a low-lying placenta, the placenta coming onto the mouth of the uterus, that is one condition where you should avoid intercourse. Because if you do intercourse, spotting हो सकती है और uterine contractions की वजह से placenta separate हो सकता है और bleeding भी हो सकती है. So that is one condition where we say avoid intercourse. Otherwise, I think you're good to go. Absolutely. Thank you. So as she very rightly said, be gentle, don't be very frequent, but you can definitely enjoy yourself. A couple of suggestions that I can give: if you're uncomfortable, but you're allowed to, you can also look at more of foreplay, because that can also help. You don't need to get into complete penetration all the time. There are other ways of pleasure, and you and your partner can explore these as well. So whatever both of you feel comfortable and whatever is allowed during your pregnancy is just fine. As far as back pain is concerned, ma'am, I think the best thing that you should do is you should consult the physiotherapist in the hospital to help you with your posture correction and to ensure that you're doing the right exercises also. Then comes what is the sources of proteins for vegetarians? Lots of things. You can have dals, chole, rajma, nuts, seeds, soya, paneer, milk. There are lots of options. I'm the vegetarian. I can give a whole list of vegetarian options. So you can include these in your diet on a daily basis. Vani ma'am, somebody has given a suggestion. Please install air conditioner in the hospital lobby and allow one attendant with patient at the time of visit. I think the air condition is already there. It's a centrally air conditioned lobby. And sure. attendants, I'm not allowing only for one reason. We know that if we have 10 patients and if I allow 10, it will make it 20. It is for your safety. You may think that you are taking all the precautions of social distancing, but how do you know what the other person is doing? So if you guys want to take the risk, I will allow. And I always am very open. If some husband wants to discuss something, I even take their calls on the phone. You're carrying a mobile phone. Make me talk to your spouse. What is he going to do? If there is an ultrasound happening, we encourage husbands to come in and watch. Okay? So understand, we are not police and Hitler and telling people with a danda ki bahar raho. Understand, it's for your own safety. हमें तो अच्छा लगता है हॉस्पिटल हरा भरा हो, चहल पहल हो, लोग आए, हमारी कैंटीन में फुटफॉल बढ़े. बट हे 2 मिनट के लिए सोचो, जून और जुलाई में आपको अपनी सोच कैसे रखनी है. स्टॉप, ग्रो अप. आई फील यू गोट टू बी मॉम्स. बड़े हो जाओ, मैच्योर थिंकिंग रखो, अपने पे विश्वास रखो. हर चीज के लिए मुझे अपने हस्बैंड से पूछना है या मुझे अपनी मॉम से. कम ऑन, टेक द थिंग्स इन योर हैंड्स नाउ. Okay, and we will let them in whenever you want them. अगर जरूरत होती है हम उनको बुला लेते हैं. And we also told you, right, that earlier we used to have even these sessions. I remember being in the conference room, large group of people, but now we are all sitting in our homes because we want you to be safe. And if you read any of the guidelines as far as COVID-19 is concerned, they are listing out a few risk groups, and pregnant women is a risk group. So you are a high risk group. We want you to be safe. We don't want any problem to happen for you or your baby. Even us as practitioners are taking so much care to ensure that we don't get exposure so that we can be available when you need us. Okay. I want to ask the question, Sonali. How many husbands are there today in this session? You're so worried about coming with your husbands. How many of them are there today with you? Can somebody put the number in the chat box? Lovely. I would love to know how many husbands are there in the room today. Ma'am, there's a question. When would you expect to have a twin delivery? In which week? See, the twin delivery, like normal delivery, any other singleton delivery, the period of maturity is 37 weeks. But again, twins, because the uterus becomes heavier, tend to deliver a little early. Okay? And twins में जो lung maturity होती है, जो actually premature baby के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है कि अगर टाइम से पहले बच्चा हो जाए तो उसके फेफड़े थोड़े कमजोर होते हैं और पूरी तरह से फुल नहीं पाते हैं.
जो लंग मेच्योरिटी होती है वो ट्विंस में फास्टर होती है, 2 वीक्स फास्टर होती है. तो अगर ट्विन 34 वीक पे भी डिलीवर करता है तो उसकी लंग मेच्योरिटी 36 वीक्स जितनी होती है. सो उनमें प्रीटर्म जो प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की, उसके चांसेस कम होते हैं. But otherwise, there is no hard and fast rule. Sometimes, if the mother is too uncomfortable, the BP goes up, हम electively twins को जल्दी deliver कर लेते हैं. But I still like to take them up to 35 weeks, you know. So, that's it. So there are 2 husbands in the audience, ma'am. We got some response. Good. See? Yeah, good. That But tells it's us. like, you know, literally, it's hats off to those husbands. And this month we also have Father's Day coming up. So this year's Father's Day is a big celebration for you two guys who are with us today morning. Ma'am, there's a question. Would I be feeling my baby kick less if the placenta is to the front? That means I have an anterior placenta. And when should I not worry? Yeah, it has nothing to do with the baby's kicks, the anterior placenta. Okay. And we tell women to keep a kick count when it becomes, you know, when we can salvage the pregnancy. Now let me explain it to you. छठे महीने में आप किक काउंट रख के क्या करोगे? जस्ट बी अवेयर. और उस टाइम पे बेबी छोटा भी होता है, छठे सातवें. अब उस टाइम पे अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाए तो हम उस बच्चे को बाहर निकाल के सैल्वेज नहीं कर सकते. आउटसाइड इनसाइड दोनों जगह रिस्क सेम है. If you're not aware of your baby in your 6th or 7th month, come to the hospital, check. But conscious kick count, I tell women to start getting more conscious as soon as they finish 7 months. Because that time, if something goes wrong with the baby, we can immediately deliver you and take the baby out of a condition which is not conducive for the baby. उसे अगर अंदर कोई तकलीफ हो रही है, वो सबसे पहले इंडिकेशन मदर को देता है. मूविंग लेस मीन्स या तो खाना पूरा नहीं मिल रहा है ना, तभी बच्चे सुस्त होते हैं, कोई कॉर्ड कंप्रेशन हो गया है, राइट. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज 3 times a day after your meals, lie on your left side, count for 1 hour. You should be able to feel good 6 to 7 kicks in that 1 hour. If that count is good, you do it 3 times a day so that through the day, you can't do it all the time. But supposing morning में baby हिला है, आफ्टरनून में नहीं हिला, start getting suspicious. Look for 1 hour more. नहीं होता, go to your doctor. Okay? और किक्स का टाइप भी थोड़ा सा चेंज होता है. 7th 8th month थोड़ी रोबस्ट किक्स होती हैं. Baby moves a lot. जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है, in the 9th month it moves, but maybe you know the intensity थोड़ी चेंज हो जाती है क्योंकि उसके पास जगह कम हो गई. The babies get cramped as they get bigger. And don't, I think Shonali must have covered that, don't lie on your back. Always lie on your side. That way you're giving maximum circulation to the baby. Okay? And just be aware of your baby. Don't ignore less kicks. Yeah, so as ma'am said, you know, if you have something as you had a meal, your sugar levels are up, that will also make your baby active. Lying on your left side is better circulation, which will make your baby active. And if I have a panic call from a mother, I also tell her to do a lot of deep breathing while she's lying on her side. So when the oxygen goes up, that can also wake up a baby. So if you're panicking, if you're worrying that my baby is not moving, you can try these things. And then if you're still worrying, always you can come and get checked. Traveling outstation, you need to take permission from your doctor if you want to travel for 6 to 7 hours. It could be road travel, train travel. Right now, I will personally say don't travel. It's better that you kind of, you know, stay grounded because you will not be able to maintain so much social distancing at this time. Okay, I think how to prepare for normal delivery. My whole session was about that. I think we should wrap up now, ma'am. We are almost at 12:30. We were supposed to close at 12. If there are any questions which are still unanswered, maybe you can all share that across with me through my handles or to the Cod Live team. They will see which questions and how to answer them. Thank you very much, Dr. Vani, for this opportunity. It's been an amazing experience. I would love some feedback if all of you mamas and papas who are in the audience, if you can let us know how you enjoyed the session, what was
what was your learning experience, etc., etc., etc. On this Sunday morning. We would be really happy. So thank you, Dr. Vani. Thank you, Code Life. Thank you, mamas and papas. It's been an amazing morning. Thank you, Shonali. I think this was such a valuable session. Whoever is here today is blessed and privileged, and I'm sure it's going to make a lot of difference to them in their pregnancy and childbirth. Thank you again. Thank you. Thank you very much. Thank you.